Okay, so we are live. Hello and welcome, dear viewers. This is your host for today, Samruddhi. So, this is our fourth episode of our series of podcasts, Small But Significant. And we have with us Master Ritik, who has a background of electronics and telecommunication engineering. And he has grabbed a seat at the TCS. So, welcome, Ritik. Thank you so much for having me here. Okay, so So shall my we name is start? hi guys. My name is should I Okay, introduce please. myself? Yeah, please. So hi everyone. My name is Ritik Jitendra Obale. I'm a final year engineering graduate specialized in electronics and telecommunication engineering from Ramrao Udik Institute of Technology, Naval. I have just recently given my final eighth semester examination, and I'm a 2022 place student of batch 2022 in TCS. Okay. Yeah, So Samriti. now, just tell us brief about your journey at getting placed into TCS. So getting placed into a TCS, I would say it does not have any much struggle. It's a very simple process. There are just only two steps in it. The first is the technical assessment, and second is the interview. The best part about TCS that there are only two different companies have different rounds. So I've been in interview for companies where there were 4 rounds, 5 rounds, 6 rounds, n number of rounds depending upon the company's requirement. But the best thing about TCS is that they keep their procedure very short and sweet. So you will know that you're placed or not in just two steps. The first is assessment, and the second is the interview. Okay, so how long was this process? This process was very quick. I given my assessment within like 4 to 5 days. I was given the interview schedule. My interview happened, and exactly the next day of the interview, I got the results in the evening. So it was very quick. Even before I came to know about, even before I was out of the interview experience, I was having my result in hand. So it was very quick. Okay, all right. So were there two exams like TCS Ninja and TCS Digital, or there was a combined one exam? Okay, so actually there are two different interviews. TCS digital one is different and TCS Ninja one is different. Ninja is for a package of 3.36 LPA, while digital is for 7 LPA. But what happened with me was I was actually selected for the digital interview. Actually appeared for the digital interview, but as that was my first interview, I was not very confident. My skills were not that good. Even my resume was half empty at that time. So I guess they placed me in Ninja. So I appeared for the digital interview but got placed in Ninja. Right. So what was your preferred language? My preferred language was Java. Actually, it's not Okay. an issue with any company. You can choose any language according to you. They just check your programming skills, and language doesn't have anything to do with it. You can choose anything. Okay. So did you have any experience like internship experience prior to this? Actually, the thing is that TCS was the first recruiter of our college. So that was the first interview I was giving, and it was the very start of the placement season. Actually, the placement season started actually with TCS. I don't think there was any company before TCS, or it might be one, hardly one company might be there before TCS. So TCS was the first company. So we were very new to the process and we didn't have any experience of an internship or a project. We had nothing. We started doing everything after that. As we were going with the process, we came to know that, yeah, this is important and we have to do it. So at that time, I was not having any internship. Uh, Sorry, I was not having any project, but I was certainly in an internship, in a web development internship, not a programming based. So in your opinion it is important and that is what Yeah, it's very important. Either you should have a good amount of projects or you should have a internship. See, what matters is that you should have a working knowledge on the technology you want to get placed in. Having working knowledge of the technology is very important. Just mugging up things and having a strong theoretical background will not help you. You need to do all the things hands on. So either you need to have internships or you need to have projects to balance out your resume.
So at that time, as I was not having any project, I was into an internship. But as now you will see that my resume has a balance of both the things. So it's very Right. important to either have one of it. If so, I think the first preference should be given to project. If not project, then internships also help. Okay, so like after this, after getting this job, you did some projects. Yeah, I did some projects. I worked on my final year project, which was a very big project. So yeah. Okay, so in the interview, what all did you like come across? What were the questions? So basically for TCS, if you'll go for both the interviews, that is for Ninja or for digital, there is a panel of three people. One is HR, second is PR, and third is the MR. MR is managerial round, TR is technical round, while HR is the normal human resource. So for any interview of HR, there is a single interview where all the three panelists are present. So at the start of the interview, the HR tells you to verify your government ID proof just for the sake of verification that you are the same person sitting for the interview. So the HR will start the interview by asking you, tell me about yourself, or some basic kind of a question, of which college you are from, what is your pointer or XYZ questions like that. HR will start with a very light and basic questions. Will tell you to verify your ID, and then the HR will take a back seat, and the TR will come on the front seat. So then TR will start asking you technical questions. It could be anything from your programming language, why you have chosen this programming language. I would like to add that when they asked me what is your preferred programming language, and I said that my preferred programming language is Java, they asked me why Java. I told them it is platform independent XYZ, but they wanted a proper and proper finished answer. So it's very important to know if you're choosing a language, why are you choosing it? What are the benefits of it? What you can do with it in future? What are the current coming trends in that language? You need to be very on point in the technology game. So that he asked me, "What is your language? What, why have you chosen this language?" And like certain questions related to that. And technical round is quite a bigger section in that interview, while the manager just takes 10 to 5 minutes of yours, and the HR is just for the sake of verification. He doesn't ask much. He'll just ask you about the company policy. Do you know there is a bond of 1 year? And if you break the bond, you need to pay 50,000 rupees to the company. So that's basically the technical section is bigger, and you need to focus more on the technical section. As I have appeared on multiple interviews, I have noticed or I have observed that whichever company you go, wherever you go, your technical interview will always start with oops. So it's very important to have a very working knowledge with all the syntax and why it is used, when it is used, when it can be used, what are the exceptions of using it. It's very important to know entire thing about oops. Any technical interview will start with oops. It could be any interview for any company, it will start with OOPS. So it's very important to have basic knowledge of OOPS. If you know OOPS, you have like cleared 50% of your interview because main questions are on OOPS. After that, I will ask questions on SQL, and in SQL, any SQL interview will not finish without asking you about joins. So it's very important to prepare joins, those outer join, inner join, and etc. etc. It's very important to prepare joins along with their proper syntax. When are they used? They'll give you theoretical tables that this table contains this columns, this table contains that number of columns. How you will do inner join between them, outer join between them, or full join, this join, right join, left join, that kind of stuff. So it's very important to know joins in SQL and OOPS in programming. Also, as my technical interview was for the digital and not for Ninja, they asked me all sorts of new technologies, right from cloud, ML, blockchain, cybersecurity. So if you are going for a digital interview, then you need to surely be uh, very prepared with all those current tech. Otherwise, with Ninja, you don't need to know that much.
Right. So being And updated if is it, very important. yeah, because the technical, the main profile, the TCS digital profile is mainly for the new tech. If you Right. are just for the sake of programming, they'll take you in Ninja, but you should have a working knowledge. I would not say entirely working knowledge, but a basic knowledge along with some good sorts of some new working knowledge in new tech as well for the digital interview to crack. And in the MR round, MR round is mostly behavioral round, so they'll ask you some basic behavioral questions that if such conflicts happen between you and your manager, how are you going to deal with it? If your team members don't want to cooperate with each other, what are you going to do? So what I was asked that the first question that I was asked was, what is the one thing that you have learned or improved in the last or past 30 days? What is the one thing you did in the past 30 days? So as that was my first interview, I was not very confident कि क्या पूछ रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या है. So I just gave them a very basic and a vague answer that yeah, I was preparing very hard, this and that. But he said that no, I want a very specific answer. कि What you did in the last 30 days. So as that was my first interview, I didn't know the tactics of the trade. So I just said whatever was true. I just told him that, sir, this is the start of the placement season. So from past 30 days, I have been just preparing programming, OOPs, and all this and that. He was like, okay, I love your honest answer, and that's it. And the question the MR asked me was, if you would be given a work to do in the next 3 days, and you don't even know what the work is, how are you gonna handle it? So to that, my answer was that firstly, I'll give a full day just to know what I need to do, how I need to do, and how much am I supposed to learn from it. And just to plan. One day I'll just need to know what I should know and what am I supposed to do, and just plan that things accordingly in one day. The next day will be utilized in understanding and learning that how to do it and practicing it that. And the third day will be executing the work. So he also, I guess, liked that because he seemed happy, but that was just whatever came to my mind at that time because that was my first interview. So yeah, So you said that you gave a very vague answer. So at this point of time, what would you be giving? Like, क्या बोलते अगर अब आज के दिन में आपको ये क्वेश्चन पूछा ना, like since you have experience now. नहीं, आज के अगर दिन में मुझे बोला जाता कि अगर आपको 3 दिन में प्रिपेयर करना है तो मेरा आंसर समवॉट काइंड ऑफ सेम होता, बट डिस्ट्रीब्यूशन वाइज में थोड़ा कम करता. मैं उनको बोलता कि नहीं, मैं एक ही दिन में सीखूंगा और 2 दिन तुम्हारा काम करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो देम कि हाँ कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी के लिए है. तो और आज के दिन में कॉन्फिडेंस अगर भी मुझे रिफ्लेक्ट पूछते तो मैं होता बोलता है. कि या एंड कॉन्फिडेंट भी रिफ्लेक्ट होता है व्हेन यू से देम कि तुम 3 में से 1.5 दिन सिर्फ पढ़ने में या सिर्फ समझने में ले लोगे तो उनको लगता है कि ये तो भाई बहुत ढीला है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको ऐसा फील कराए कि कंपनी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. हम कुछ भी करेंगे तो कम से कम टाइम अपने ऊपर लेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम कंपनी को देंगे. Right. या तो ये इंटरव्यू चला कितने देर तक था? लाइक तीनों मिला के था ना? या तीनों मिला के था एंड एक्चुअली इट वाज फॉर डिजिटल, सो इट lasted for about, I would say, 45 minutes. He told me to code one question, asked me some technical question. The technical section was the bigger section. Then MR just asked me 2 3 questions. HR just made the verification. Yeah, so it lasted for about 45 minutes. As it was a digital interview, it lasted for 45 minutes. Otherwise, it would have, as if it was specifically for India, it would have just lasted for, I guess, half an hour or 25 minutes. Okay, so you directly landed a job offer or did they hire you as an intern? No, I directly landed a job offer. Different companies have different policy, and TCS does not have this policy of firstly making them an intern and then your employees. TCS just directly gives you job offers. It's different with different companies. If you'll consider with, I would say, Cognizant. So Cognizant has a policy that you will be hired as an employee, but firstly you need to do an internship of 2 to 3 months, and then you will
officially join as an employee. Since we are live, you all can comment down your questions below. He'll answer all of them. Yeah, so offer letter कब आया? ऑफर लेटर इंटरव्यू के लाइक 2-3 इंटरव्यू के नेक्स्ट डे तो हमको पता चल गया था कि दैट वी आर सिलेक्टेड। एक दो दिन अभी तो एक दो दिन नहीं, 4 to 5 days गए, उसके बाद ऑफर लेटर आया एंड उसका वैलिडिटी 1 week के लिए था। दैट यू हैव 1 week in your hand to just think about it and accept it or reject it. राइट। सो उसके पहले भी आप नहीं, उसके पहले तो आपने इंटरव्यूज नहीं गए थे। सो व्हाट इज समथिंग यू शुड अवॉइड? लाइक अभी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके हिसाब से क्या क्या अवॉइड करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे? The first thing I would say to avoid is ना, avoid referring multiple notes and multiple websites. Like क्या होता है, हम लोग हर इंटरव्यू के साथ नए रिसोर्सेज के लिए जाते हैं, नए वेबसाइट्स के लिए जाते हैं, नए वीडियोस के लिए जाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, हम लोग जब इंटरव्यू में बोल रहे होते हैं तो वो सारी जगह का थोड़ा थोड़ा याद आता है और फिर हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं कि हम एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। So it's very important to just pick a single reference book or reference YouTuber or website or portal, whatever you can go for, but just to pick a single one which fits best to you and फिर उसको ही फॉलो करो, बस ज्यादा चीजें फॉलो मत करो। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक अपने खुद के नोट्स बनाओ। आई हैव सीन पीपल जो हर इंटरव्यू के पहले कहीं से एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और वो पढ़ के चले जाते हैं। तो पिछले वाले इंटरव्यू के लिए जो पीडीएफ पढ़ी थी उसमें सेम क्वेश्चन का आंसर दूसरे वे में लिखा था, इसमें उसमें इसमें उसका अप्रोच अलग है। तो तुम फिर जाओगे वहां पे और फिर फंबल कर दोगे या कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है, इवन तो तुम्हारा ये इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट पिक अप दोस पुराने वाले नोट्स एंड देन स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। तुम एक बार गो थ्रू करोगे एंड यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ये तो मुझे आता है। बट इफ यू विल पिक नए नोट्स तो तुमको वापस से ऐसा लगेगा कि यार वापस स्क्रैच से शुरुआत हो रही है, वापस सब कंफ्यूजन बढ़ रहा है। एंड ऑल्सो अभी कैसा हो गया है, एज मैंने सेम नोट्स रेफर किए मल्टीपल इंटरव्यूज के लिए, इवन इफ मुझे कल को मुझे एक इंस्टेंटेनियसली किसी एक इंटरव्यू को अपीयर करना पड़ता है विदाउट हैविंग टाइम टू प्रिपेयर, और अगर मुझे सेम क्वेश्चन आता है तो मुझे याद है आंसर, क्योंकि मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज में सेम आंसर किया है। तो आंसर मेरे दिमाग में काफी अच्छे से फिट है। अदर देन मैं कल वो नए नोट्स ढूंढूं, वापस से नया कुछ पढ़ने बैठूं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ trusted resource, your trusted website, your trusted friend, trusted notes, anything. It could be anything. रेफरेंस बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट इट नीड्स टू बी वन। और अगर मुझे कुछ रेकमेंड करना हो तो आई वुड रेकमेंड, देयर इज अ डीएसए सीरीज बाय लव बबर ऑन यूट्यूब। लाइक यू कैन श्योरली चेक आउट, आई फॉलोड हिम। जस्ट एक जन का ही आप यूट्यूब चैनल या वट एवर रिसोर्स लो और उसको ही फॉलो करो। आप उस फ्लो के साथ जाओगे, इट वुड बी बेटर देन गोइंग हियर एंड देयर डिस्ट्रैक्टिंग। ऐसा मुझे लगता है। यू शुड अवॉइड हैविंग मल्टीपल रिसोर्सेज एंड चेंजिंग योर रिसोर्सेज frequently. Just go with what's what fits best for you. Somebody is asking, Aniket Palse is asking what was the level of questions in NQT. NQT में question का level was not very difficult. It was kind of like mid-level questions थे, but what happens in for every question, the window is stuck. You can just बी ऑन दैट क्वेश्चन फॉर अ सिंगल मिनट, और वो मिनट पास होते ही तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हो। तुम अटेम्प्ट करो या ना करो, तुम क्वेश्चन को आगे नहीं जा सकते, क्वेश्चन के पीछे नहीं जा सकते। तुमको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम अलॉट किया होगा, तुमको उसी के अंदर करना है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम किसी क्वेश्चन पे आओ और तुमको वो हो ना पाए, 1 मिनट हो जाएगा, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे, फिर तुम वापस ना पीछे आ सकते हो ना आगे जा सकते हो। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से ऐड करता है। अदरवाइज क्वेश्चन का लेवल इतना कुछ नहीं, मिड लेवल होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और आपने एप्टीट्यूड कितना टाइम प्रैक्टिस करा था? लाइक कब स्टार्ट किया? एप्टीट्यूड एक्चुअली तो मुझे पता भी नहीं था कि इंटरव्यूज में एप्टीट्यूड होता है। तो जब मैंने पहला वाला तो मैंने तब दिया, पहला वाला एक्चुअली मैं सच बताऊं तो पहला वाला मैं जिस प्रोसेस में था, मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या इंटरव्यू में। मैं बैठा और तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा इतने सारे सेक्शंस होते हैं, ऐसा ऐसा करना होता है, ये होता है, ये होता है। मल्टीपल लोगों के साथ यही होता है, आधा टाइम तो यही समझने में निकल जाता है कि ऐसे भी राउंड्स होते हैं। बिकॉज विद राइट। कमिंग कंपनीज नए नए राउंड ऐड होते जाते हैं, कुछ राउंड कम होते जाते हैं। तो काफी ज्यादा वो होता है, और हमें पहले एक्सपोजर नहीं होता है इन सारी चीजों का, सीनियर वगैरह नहीं होते हैं, तो कुछ पता नहीं होता है। मैंने एप्टीट्यूड नहीं बोल के तो भी ना, मैं फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करता था। मतलब जिस दिन से मुझे पता चला ना कि हाँ मुझे इंटरव्यूज के लिए एप्टीट्यूड की जरूरत है, मैं रोज थोड़े एप्टीट्यूड
में थोड़े एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़े लॉजिकल रीजनिंग वगैरह रोज थोड़े थोड़े सॉल्व करता था। 5 to 10 क्वेश्चन रोज रोज करेंगे तो विद इन सम डेज तुमको समझ आ जाएगा करना। एंड ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट कि हर एक टॉपिक को पिक करने की जरूरत नहीं है। आप पिक करो कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन सा आप काफी अच्छे से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और उसको स्टिक करो। And also the thing is that ना you don't need to solve a 10 minutes का question, 10 marks, sorry 10 marks का question। ये हमारी theoretical exam नहीं है कि हमको step by step जाना है और पूरा 10 मार्क का question solve करना है। It's just about कि you need to know the tricks of the trade। इसको इससे divide करते हैं, इसको ये multiply करते हैं, आंसर आ जाता है। So it's more of mental maths and more of like being quick in maths and mostly mental things। You don't need to like take a मतलब paper मोर and ऑफ pen and लॉजिक start बेस्ड। solving a 10 minutes का question। Yeah, yeah, yeah. Logic based. Everything in placement is all about logic. Even what you speak in the interview, it's all about logic. If you speak something wrong or something out of the context that you don't know, he's gonna pick up that question and you are in trouble. राइट। So it's a very important कि हम resume में क्या add करें. Everything in the interview is about logic. It's more of logic than hard work. You need to be smart and logical than just doing hard work and hard work. Because I've seen people working very hard and still not landing a job, and some people not even doing anything and still landing a job. राइट। Okay, so we are open to the questions. Please comment it below. So, what are your future plans? So my future plans that currently I'm thinking of joining the company and then working for 2 hours and working for 2 years. And after 2 years, I'm planning to do an MBA, but that's just a plan now. I might do it earlier or I might delay it, but yeah, Okay, so because we'll I just think wait for 2 minutes if there are any questions. Yeah, please continue. yeah. So because I think it's very important to have a post graduation degree, so one should like definitely go for it if their condition supports them. ऐसा मुझे लगता है तो मिल रहा है चांस तो कर लो। एंड सिंस ये टेक्निकल है थोड़ा तो थोड़ा मैनेजरियल का भी एक मतलब आइडिया आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। इट्स बेटर बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज ना कंपनी इज ना आजकल सिर्फ टेक्निकल पे नहीं रिलाय होना चाहती है। वो चाहती है देयर कुड बी अ पर्सन जो टेक्निकली भी लीड कर सके, एट द सेम टाइम मैनेजरियली भी लीड कर सके, जिसको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट स्किल्स भी आती हो। बिकॉज जस्ट टेक्निकल स्किल्स से तुम बस एक टेक्निकल लीड बन के रह जाओगे। सो राइट। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट का knowledge. Companies are making it more like they are trying to hire people who are like better in multiple domains. That's what it is. So it's very important कि करे आगे जाके हम लोग management and all. And most of the people do management degree after engineering. It's not like that. You can also do MTech and all, or like technical degree also. You can also do technical degree. Yeah, you can do anything. और वो जो हमारे रेज्यूमे में टीपीसी का रेज्यूमे है उसमें एक फॉर्मेट है पर्टिकुलर, तो उसमें नीचे दिया हुआ है हॉबीज करके। डज दैट रियली मैटर? लाइक उस पे कुछ नहीं नहीं, क्वेश्चंस that does वगैरह आए not थे। matter. नहीं नहीं, दैट डज नॉट मैटर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग को बचपन से एक बता के रखते हैं कि यू नीड टू हैव लाइक दिस परसेंट ऑफ मार्क्स। द एचआर विल सी कि तुम कौन से कॉलेज से हो, कौन से स्कूल से हो, तुमने क्या किया है, सेकंड में तुमने डांस में थे तो कहाँ पे खड़े थे। इट डज नॉट मैटर। दे डोंट इवन लुक एट योर रेज्यूमे, और दे जस्ट लुक एट योर रेज्यूमे इन द प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप सेक्शन। दैट आई कैन श्योरली गारंटी यू कि अगर रेज्यूमे देखते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप सेक्शन देखते हैं। आप उसमें जो लिखोगे वो आपसे पूछा जाएगा, इट्स फॉर श्योर। तो लाइक जरा भी कभी ऐसी गलती मत करना कि जिस बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, जो हमने सच में किया नहीं है, जिसके बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, वो रेज्यूमे में ऐड करना। ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होगी। बिकॉज अगर रेज्यूमे में ऐड किया है प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप सेक्शन में आपने कुछ, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, एंड यू नीड टू बी रेडी फॉर इट। और अदर देन हॉबीज वगैरह कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं पढ़ता, इसीलिए वो नीचे रखा गया है रेज्यूमे में सब कुछ। बिकॉज एनीवेज कोई नहीं पढ़ने वाला है उसको। ऑल्सो वो ना ही पॉइंटर देखते हैं। इट्स नॉट अबाउट द पॉइंटर, इट्स अबाउट द टेक्निकल नॉलेज यू हैव। तो पॉइंटर डज नॉट मैटर, पॉइंटर डजंट मैटर योर कॉलेजेस कितना परसेंटेज था। नथिंग नथिंग मैटर्स, जस्ट योर टेक्निकल नॉलेज। ओनली योर टेक्निकल नॉलेज कैन गेट टू यू टू द इंटरव्यू, नथिंग एल्स।
So in like your opinion, what is important, like important topics थोड़े बहुत? For what? For interview? हाँ, For the like technical interview? technical round. Yeah. Technical round के लिए, as I already said, कि oops are very important. Go in whichever company, whatever position, wherever you are, anybody can ask you oops at any time. I'll share my like personal experience. मुझे communication round में उसने oops का concept पूछा था. Communication round is just supposed to know कि how this person communicates. Is he good in the languages or that kind of sort of a thing. But उसने मुझे communication में oops का concept पूछा था. The reason is that I'm from EXTC background, so people doubt कि इसको आईटी का कितना पता है, इसको आता है या नहीं आता है. So just to check कि इसको before sending me to the technical interview, just to check itself in the communication round कि इसको भाई कितना knowledge है actually में आईटी का, या सिर्फ ये ऐसे ही फॉर्म भर के आगे everybody gave एग्जाम्स इसके जगह पे और ये अभी देने आ गए इंटरव्यू. इसीलिए उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन राउंड में ही पूछना चालू कर दिया. कम्युनिकेशन राउंड में शी आस्क्ड मी व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हाट दिस एंड दैट. So it's very important to know OOPS. OOPS is the basic thing in interviews. OOPS are the ABC of interviews. You need to get that right. उसके बाद everything else will fall in place. And also, second thing is that it's very important to have a very hands-on knowledge of coding. They'll tell you to code anything. They can tell you code um, something very basic like palindrome or etc. Right from that to combination of strings and arrays and multiple things like that. But what I have noticed is that you can go in any interview, the questions are mostly focused on strings and arrays because rest of the things are considered to be more advanced in Java. So you need not to know that, but it's very important to have a good knowledge and coding knowledge of strings and arrays. All the interviews that I have been in till now were based on strings and arrays. So do your strings and arrays very nicely. Know how all the loops work, what is while true and what is while false. You need to know all those knowledge, and you can only get that knowledge through coding by yourself. You can take help, but you need to code on yourself. Yeah, that's it. Oops and string and arrays. Learn by practicing basically. Yeah. Very important. Hands-on experience in coding is very important because if you have coded it yourself, then no matter if you have prepared or not, you are gonna answer it. And they come to know. Basically, these people are very smart. They come to know that you have knowledge or not. राइट. सो ये टेक्निकल राउंड वगैरह के टाइम पे जैसे मतलब उन्होंने कुछ भी पूछ लिया तो आपको स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा उससे पहले. सो हाउ डिड यू मैनेज योर स्ट्रेस सिंस इट्स योर हाँ, फर्स्ट थोड़ा बहुत इंटरव्यू? स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा था, बट व्हाट हैपेंस दैट ना, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में तो इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि समझ ही नहीं आता कि हम अपने बारे में भी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं. वी जस्ट लाइक कीप ऑन टॉकिंग 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 और कुछ भी बोल देते हैं हम. फिर एक दो क्वेश्चंस के साथ जैसे हम आंसर हमें आते, फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हो जाता है, उसके बाद एक आध क्वेश्चन आ जाता है. फिर क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है हाँ इसका आंसर हमें पता है, हम बताते हैं. दूसरे का बताते हैं, तीसरे का बताते हैं, थर्ड क्वेश्चन के बाद तक फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हमें भी आ रहा है, वो जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है हमें समझ भी आ रहा है और हमें आता भी है. तो उसके बाद इतना प्रॉब्लम होता नहीं है. एंड बेसिकली कोड आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के बाद करने बोला जाता है, तो तब तक तुम लोग थोड़े चिल हो चुके होते हो, तो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम. बेसिकली प्रिपेयर्ड जाओगे तो टेंशन कम होगा. प्रिपेयर्ड नहीं जाओगे तो इट्स ऑल टेंशन. अब पता नहीं आगे क्या उनको पूछ समझ रहे आ हैं. जाता है. हाँ, सच में होता है ऐसा. आई हैव बीन इन इंटरव्यूज जहाँ पे ऐसा कुछ पूछ लिया है जो मुझे सुन के हम लाइक कि क्या ये कॉन्सेप्ट है भी क्या, ऐसा होता है क्या, मुझे तो पता नहीं, ऐसा होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, और ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमको पता हो कि एग्जैक्टली हम किस कंपनी के लिए इंटरव्यू करने जा रहे हैं और उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. आई वॉज इन वन इंटरव्यू जिसमें मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करके गया था और उनका मेजर रिक्वायरमेंट था डीबीएमएस, और मैं डीबीएमएस प्रिपेयर ही नहीं करके गया था. तो उन्होंने मुझे ऊप्स के क्वेश्चन किए, मैंने उसका आंसर किया एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी डीबीएमएस के क्वेश्चन. बट बट एज मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, मेरे को प्रीवियस जो थोड़ा बहुत नॉलेज था उससे मैं क्वेश्चंस डॉज करने की कोशिश कर रहा था. बट डॉज करते करते उसको समझ आ रहा था कि मैं बहुत तरीके से गंदी तरीके से मैं फंबल कर रहा हूँ.
तो मैंने उनको बोल दिया कि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आपका रिक्वायरमेंट डीबीएमएस है। मुझे लगा सिर्फ प्रोग्रामिंग है, तो मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग प्रिपेयर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है और जनरली उन लोग क्या पूछते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन काफी रेयरली चेंज होते हैं। उनका एक सेट ऑफ वो होता है, वो ही वो आगे आगे फॉलो करते जाते हैं। तो मतलब तो थोड़ा ट्रेंड अगर आप कहीं पता भी, लगाना है। हाँ हाँ, ट्रेंड का पता लगाना है। अगर आपको एक बार पता चल गया ना कि आप एक बार किसी से पूछ लो कि तुमको क्या पूछा था, या आजकल तो लाइक इट्स वेरी इजी कि हम लोग यूट्यूब से पता करें क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था। तो किसी भी इंटरव्यू को अपीयर करने से पहले यूट्यूब पे पता कर लो कि क्या पूछा था उनको, और आप इंटरव्यू जाके आओ, आप बोलोगे उसमें से 90% क्वेश्चन सेम थे। रेयरली अगर एचआर या टीआर का मूड ठीक नहीं हुआ तो कुछ एक आध दो यहाँ वहाँ हो सकता है, बट उनकी उनके रिक्वायरमेंट सेम है तो उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सेम ही होंगे, कुछ चेंज नहीं होता। नहीं। somebody- जैसा, और और क्या बोलना था, और मुझे कुछ एक चीज बोलनी थी, हाँ। हाँ, और मेरा लाइक एक पर्सनल मेरा सजेशन है कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ना, तो उसको एक काफी ना शॉर्ट एंड स्वीट ही रखो। लाइक आई हैव सीन पीपल एडिंग कि मेरे को 10th में इतने परसेंटेज थे, 12th में इतने परसेंटेज थे, इसमें मेरे को इतने मार्क्स थे, आई स्टूड फर्स्ट इन मैथ्स इन दिस इन दैट। वो उनको मैटर नहीं करता है, उनको कुछ नहीं करना है आप कौन से कॉलेज में थे, स्कूल में थे, क्या किया आपने। व्हाट मैटर्स इज दैट कि अगर मैं तुझे हायर करूँ अभी, तो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ब्रिंग टू द कंपनी। तो हमें हमारे पॉजिटिव्स एंड हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक हमारा नाम कौन से कॉलेज से है, क्या पॉइंटर है, हमारी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है। इट शुड बी मोर ऑफ दैट इम्पोर्टेंट थिंग स्पेसिफिक, यू शुड नॉट जस्ट वेंडर हेयर एंड देयर लाइक टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, मुझे क्या पसंद है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंक्लूडिंग हॉबीज, लाइक रेज्यूमे पे ठीक है आपने ऐड कर दिया हॉबीज, बट इंक्लूडिंग हॉबीज इन योर इंट्रोडक्शन sounds very irrelevant to me. Like अगर मैं इंटरव्यू कल को लेने बैठा हूँ, somebody tells me कि आई एम गुड एट सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, तो कंपनी को इसका क्या फायदा होने वाला है। बेसिकली these people are there to hire resources for the company। वो क्या करेंगे, आप अच्छा डांस करते हो, अच्छा गाते हो सुन के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे पॉइंट्स उनके सामने रखो जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी वांट्स टू हायर somebody फॉर द पोजीशन ऑफ डेटाबेस, लाइक डीबीएमएस के लिए कोई वो किसी को हायर करना चाहते हैं, और अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ कि मैं तो जावा प्रोग्रामिंग में अच्छा हूँ, डीबीएमएस का मुझे कुछ नॉलेज नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट इंटरव्यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड जस्ट पुट दैट फॉरवर्ड। दैट विल हेल्प मतलब यू। मुझे समझना है दैट्स पहले कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है एंड देन आई हैव टू सेल माय ओन स्किल। यस 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 यस। अगर उनको उस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट उनको वो बताना कि मुझे ये अच्छे से आता है, बिकॉज दे डू नॉट वांट इट। उससे बस टाइम वेस्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू में कंफ्यूजन सा हो सकता है। ही माइट आस्क यू लाइक कुछ वो पकड़ के वो कुछ और ही पूछने लग जाएगा। एंड ऑल्सो ऐसा भी कुछ नहीं बताना चाहिए जिसके बारे में हमको पूरा फुल्ली आइडिया नहीं है। अगर नहीं है तो बोल दो आई हैव अ बेसिक और वेरी बेसिक टू लिटिल नॉलेज ऑफ दिस एंड दैट थिंग। ऐसा मत बोलो कि मुझे आता है ये चीज, आता है साउंड्स लाइक कि यू यू हैव हैंड्स ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस उसमें। So they will start asking you concepts, and they'll even ask you to code something in the chat box. I have been in the interview where उन्होंने मुझे चैट बॉक्स में HTML का कोड, HTML CSS का कोड करने बोला था। तो वैसा ही इट्स इम्पोर्टेंट कि यू शुड नो क्या बोलना है क्या नहीं। You don't have to sound overconfident. या यू शुड नॉट साउंड ओवर कॉन्फिडेंट, और इवन इफ यू विल साउंड ओवर कॉन्फिडेंट दे नो हाउ टू लाइक ब्रिंग यू डाउन, so don't worry, we are expert Right. in that। So, और like, इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, और इतना डरने की जरूरत नहीं है। These people are like, we most of the time I have encountered like these people, hiring people are good people, they like वो सामने से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, दिल गिव यू टाइम कि यार यू कैन डू इट, आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। आई आई हैव बीन इन एन इंटरव्यू जहाँ पे मुझे 1 घंटा दिया गया था, और 1 घंटे में मुझे ना 3 कोडिंग क्वेश्चंस करने थे, एंड देवर ऑफ वेरी एडवांस लेवल, तो मुझे नहीं आ रहे थे। तो इंटरव्यूअर वाज वेरी गुड, ही टोल्ड मी कि आप इसको इस अप्रोच से सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, ये कर सकते हो। तो दे गिव यू इनपुट्स, दे आर गुड पीपल, बट यू जस्ट don't need to sound very overconfident or like something। You should not think of yourself as कि मैं कोई I have somebody जिसको कंपनी को मेरी गरज है, ऐसा।
So, how would you sum up your experience? I would sum up my experience. My experience was very good. I have been in like 5 to 6 interviews, out of which I have cracked like 3 to 4. एक दो ही ऐसे वैसे थे जिसमें I was not sure कि यहाँ पे करना क्या करने जाना है. Even my first interview, the TCS one was my first interview of my life. मुझे तो पता ही नहीं था इंटरव्यू में होता क्या है. I just sat for it and I cleared it. So interview experience for me was good. You just need to be like smart in it. You will figure out. आप एक दो इंटरव्यू दो, आपको थर्ड इंटरव्यू तक खुद से समझ आ जाएगा. So the key is to be in as many interviews as you can. एक पॉइंट के बाद ना आपका डर खत्म हो जाता है और आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इवन इफ मुझे ये चीज नहीं आती तो मैं इसको ऐसे करके प्रेजेंट करके ऐसे टैकल कर सकता हूँ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन मल्टीपल इंटरव्यूज. वो आपको हेल्प ही करेगा, अदर देन बीइंग पिकी कि मैं एक ही इंटरव्यू जाऊंगा और वो मेरे से क्रैक ही हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू बी ऑन योर लाइक ऑन योर फुट फॉर द इंटरव्यूज. सो अभी हमारे कॉलेज में भी टीसीएस आएगा, लाइक ये मंथ एंड तक तो एक्सपेक्टेड है. सो इट वाज सो ग्रेट टू लिसन एवरीथिंग, बहुत हेल्पफुल हुआ है. एंड सिंस देर आर नो क्वेश्चंस आई विल क्लोज द सेशन नाउ. Okay, thank you so much. Thank you so much, CodeOS, for having me, giving me this opportunity. Thank you. It was a good time. वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू एक्चुअली. सच में मतलब बहुत हेल्प होने वाला है. अभी सब स्ट्रेस का माहौल भी हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे भी फर्स्ट कंपनी है टीसीएस. सो या Yeah, दिस yeah, yeah. वाज हेल्प. TCS के साथ ऐसा ही होता है. TCS is the first mass recruiter, and so the placement officer will tell you कि you need to crack it. Otherwise, like आगे का पता नहीं हमको आएगी नहीं आएगी. So everybody is in stress कि हाँ भाई इसमें कैसे भी करके जाना है. But eventually राइट. आपको आगे पता चल जाएगा कि आगे better opportunities आती है. You should not rush yourself. Just be prepared and go with it. Everything will fall in place. And being from an EXCC background, it's very important to practice coding on a daily basis. रोज थोड़ा थोड़ा कोड करो, कुछ भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक भी आपके दिमाग में आता है ना कि अच्छा ये मैं कोड के थ्रू कैसे कर सकता हूँ, जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट. आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जहाँ क्वेश्चन दिखता है और लगता है कि हाँ ये मुझे नहीं आता है, तो जस्ट उसको एक बार उठाओ, करने की कोशिश करो, लॉजिक चेक करो. द प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, GFG, दे विल हेल्प यू अलॉट. और वहां पे कैसा होता है, वहां पे दे विल ऑल्सो गिव यू द स्टैट्स कि तुमसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में किसने किया है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो दैट विल ऑल्सो हेल्प. एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस जानना कैसे करते हैं. फर्स्ट एम शुड बी ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसके बाद यू कैन गो फॉर मल्टीपल अप्रोचेस. थैंक यू सो मच. इट वाज लाइक काफी एनरिचिंग था ये एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच समृद्धि फॉर हैविंग मी. लाइक मैं क्विट करूँ. या थैंक यू. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. बाय बाय.